हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एनर्जी थोड़ा होना चाहिए। ये मेरा पहला लाइव स्ट्रीम है फॉर सिनर्जी टेक एकेडमी, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आज रिएक्ट, और डेफिनेटली कुछ दिनों में बिल्ड भी करेंगे रिएक्ट के साथ एक एप्लीकेशन। जो भी आइडिया हो किसी का, कमेंट्स करके हम उस आइडिया पे काम करेंगे। मतलब बेसिकली ये मेरा एक क्लास है, सेशन है, जो मैं किसी के साथ ऑलरेडी करने वाला हूँ। सो दे विल बी ज्वाइनिंग ऑन द जीमेट बेसिकली। अगर आपको भी ज्वाइन करना है, सो आई कैन शेयर लिंक, you can comment out like that way. All right, so let's check out. Okay, let's join first our call, otherwise we will not, should not be the late. All right, all right. I have scheduled with this. It is my calendar. I think I have scheduled with this. Yep, I got it. I have scheduled with this ID. I have to join. Use camera and microphone. Allow this side to use camera, microphone. B. This camera is the same. Try again. Oh, okay, camera nahi chalega. That's okay, fine. Microphone can have multiple things. Yes. Hello, good morning. How is it? If you can let me. Yes, wait. I am not able to hear. Speakers also I had chosen this. Yes, good morning. You can be on mute. If needed, you can unmute and talk whenever. Noise येतोय खूप. Maybe it's raining. Not able to hear you. Only noise. Okay. Okay. All right. Hello. I think there's some issue with your microphone. I'm not able to hear you. I just get noise. Only noise. Anyways, you are able to hear me, right? If something is there, you can put it in the chat. Let's see. We can
एक्चुअली टू वे कम्युनिकेशन होता तो बहुत बढ़िया होता, बट ठीक है। हेलो, स्टिल नो राइट? Okay, let's start. Actually, we have to sort this out. I want to hear you also, otherwise, I will not able to understand like how much you have understood and not. Okay, so I'm just giving this context to YouTube, who is watching on YouTube. I don't know who is watching, but okay, let me see. Stream has started. Stream is also not started. Just give me a 2 minute and let me check out the stream. Yes, stream is already started. Someone has watched also for 2 minutes. Very nice. Don't know. Okay, so good. So I'll just set the context. Okay, so most probably we will going to use English because that this language is global language, and whenever everyone takes an interview or whenever anyone gives an interview, those mostly they prefer the English language. But if some topic is more relevant, or if I want to explain in Hindi, I'll use Hindi. Okay, all right, let me close this. Yeah, so first thing first, this is a directly React what we are starting, because my batch is which is I am running for जो भी students है, those are already went to the my basics HTML CSS JavaScript videos, and they have pretty much basic idea about JavaScript. So we are directly starting the React one. Okay, React के लिए basically what we need a JavaScript का basic language, and we need HTML CSS understanding, जो कि आजकल कॉलेज में हो जाता है, what I feel. ओके, बेसिक HTML आना चाहिए, टैग्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, CSS थोड़ा स्टाइलिंग, एंड अभी AI है, लेकिन हम ये जो पूरा प्रोजेक्ट व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड इज विदाउट यूजिंग AI, बिकॉज AI यूज करना इज नॉट बैड. आई एम सेइंग AI को यूज करना इज नॉट बैड, बट इट्स वेरी वेरी बैड एट अर्ली स्टेज, व्हेन इफ यू आर यूजिंग इट एट अर्ली स्टेज. So if you don't know the concepts, okay, if you don't know the concepts and you are using AI to build everything, this is not correct. That is okay, that is okay if you are a marketing student, if you are a development, if you are not a developer, if you are a marketing student and if you want to develop something and sell. So selling his is a priority, okay, selling is his primary skill, and then he is taking AI support and building something and selling, that is okay. But if you are a developer and if you are building with AI, that is for the initial stage, I am saying it's not good. Okay, so next, so basic environment, basic system, we should at least have one system, at least basic system, 16 GB RAM and everything, okay, where we can actually set up a Node.js. Weed के साथ हम लोग we will set up a React actually, and we need a Visual Studio Code. ये basic setup is what we need. Okay, once you have this Node Visual Studio setup, you can start. So first, today we will not start directly into the code, but we will start about why, I mean, what is React.js and why we need it. So today we will just go through with basics of React, or I could say why we need React at the first place. Okay, if someone has a question, please put it to the chat. I will take those uh,
once I complete any topic. Okay, let me see. Wait, I'm not able to see the chat. Okay, so first we will talk about React is a JavaScript library. It's not a framework also. Okay, it's built by Facebook team. So what was the problem? The problem, so whenever initially is problem with actually our HTML system. So how our website actually let me do this graphically. Second, वो थोड़ा बहुत अच्छे से समझेगा. So होता क्या है, हम वेबसाइट मतलब अगर वेब डेवलपमेंट की बात करें, सो वी विल टॉक अबाउट वेब डेवलपमेंट. सो वेबसाइट एक ऐसा पेज है, लाइक दिस इज वन सिंगल पेज जो कहीं सर्वर पे है और हम लोग कहीं पे यहाँ पे. सो वी एंड माय ड्राइंग इज वेरी बैड. ओके सॉरी, दिस प्लेस आई हैव अ कैमरा. ओके सो मैं यहाँ पे वी आर सेटिंग समवन विद आवर स्क्रीन. ओके, जो कि एक इंटरनेट से कनेक्टेड है. ये थोड़ा बुरा है बट ओके, इंटरनेट से फ़ोन कनेक्टेड है. तो हमको कहीं का इंफॉर्मेशन मतलब फ्रॉम समवेयर हमको एक इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे फ़ोन पे चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी बिल्ड अ वेबसाइट. ओके, तो वेबसाइट हम क्या रखते हैं सर्वर पे, वी विल होस्ट इट. सो वी डू होस्ट ऑल वेबसाइट ऑन आवर सर्वर. whenever उसको एक एड्रेस होता है, दैट इज द एड्रेस लाइक www जो भी एड्रेस व्हाट वी हैव. ओके, एंड दैट एड्रेस जो होता है वो हम यहाँ पे एंटर करते हैं. वी गेट दैट फाइल ट्रांसफर टू अवर फोन एंड व्हेन वी कैन सी इट. सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहला ये होता था फॉर द ओल्डर वर्जन्स. एक्चुअली फॉर बेसिक प्रॉब्लम इज कि whenever I click something on the website, it goes to the server. It's request like हाँ मुझे I got a new request and I got a new request मतलब basically about पे click किया या फिर contact us पे click किया. So we get all that new page is built over the server or maybe वैसा ही वहाँ पे build किया हुआ है. We have already put it. ओके, कॉन्टैक्ट अस का पेज. तो जैसे ही कॉन्टैक्ट अस का रिक्वेस्ट आएगा हम वो कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पे भेज देंगे. ओके, अभी ये जो बैक एंड फोर्स होता है राइट, जिसमें प्रॉब्लम ये होता है कि लेटेंसी आती है. लेटेंसी मतलब उसमें टाइम लगता है. इट्स लाइक इट्स नॉट लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड कि एक क्लियर, और भले ही वो एमएस में हो, माइक्रो मिली सेकेंड्स में होता है, बट it's a latency, right? And when देखो when the Facebook has launched, so Facebook का एकदम बेसिक इवेंट्स था. लाइक उसका एक फोटो था, उस फोटो को एक लाइक करना था. सो वेन एवर यू डू लाइक, वो हाँ बैकएंड में जाता, फिर उसको वो डेटाबेस में स्टोर करता, फिर वो रिटर्न आता, फिर वो यहाँ पे. सो इनिशियली देखो बैकग्राउंड में जाके डेटाबेस में स्टोर करना, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, वो हो जाएगा एंड बिहाइंड स्क्रीन डजंट मैटर. बट यहाँ पे इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होना चाहिए राइट. तो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होना हो नहीं रहता चीज़ें. तो उन्होंने सोचा कि क्या करें. सो दे हैव क्रिएटेड दिस रिएक्ट. ओके, सो दे हैव पुट इन एक वर्चुअल डॉम सिस्टम. ओके, वर्चुअल डॉम ये कंसेप्ट भी है. दिस इज लाइक, सो बेसिकली रिएक्ट क्या करता है, इट्स अ मेक अ कॉपी ऑफ एक्चुअल डॉम. सो डॉम क्या होता है बेसिकली, वट एवर वी आर हैविंग हियर. ओके, एक मिनट, वेयर इज माय पेन. ओके, so whatever we are seeing on the website is called as a DOM. DOM means document object module. ये basic आपने सब पढ़ा होगा. I am just refreshing your knowledge. So document object module. So what React has done, they have created concept like virtual DOM. So virtual DOM. So what they do is basically copy of all DOM, same copy. So whenever initially it renders, this is our main copy. Suppose it's a m, it's a main copy. It creates a virtual DOM. And then what happens is whenever do some change, so m का suppose m, suppose थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, m and d, या p का suppose d हो गया है यहाँ पे. So virtual DOM actually checks React का जो भी algorithm है, it's actually check what exact point is changed, and वही point वो सिर्फ ये वाले DOM में अपडेट करता है.
वर्चुअल डॉम में इट्स कंपेयर एवरीथिंग, हाँ ठीक है, व्हाट यूजर है चेंज इज चेंज दिस पी टू डी, एंड वो पी का जो डी है वो यहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट करता है, दैट्स इट, दैट्स अ कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल डॉम. सो बेसिक नीड रिएक्ट को उसके एप्लीकेशन को परफॉर्मेंस इंक्रीज करना था फेसबुक को. सो दे हैव इन्वेंटेड दिस लैंग्वेज एंड लेटर ऑन वो बेसिकली उन्होंने ग्लोबल कर दिया, एंड नाउ वी एक्चुअली सी द रिएक्ट लैंग्वेज विच इज दिस. It's a JavaScript library. It's a simple JavaScript library. Okay. Basically, you can see it's a simple thumbnail component. It's highlighting over here. You can see, right, thumbnail component. Yeah. Okay. And ये React का जो basically वर्चुअल डॉम वाला जो भी रिएक्ट ने यहाँ पे किया था, सेम देन कॉपीड, और कॉपीड नहीं बोल सकते, सेम कंसेप्चुअली गूगल ने फिर लगा निकाला जिसको एंगुलर का नाम दिया, एंड फिर देर आर फ्यू गैप्स, और यू कैन से मर्जर. ओके. सो उसके बाद ये व्यू आया. व्यू इज वन अगेन जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क सेम लाइक रिएक्ट, बट इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है. ओके. सो लेट मी कंपेयर एंगुलर. वैसे मेरा एक वीडियो भी है, इफ यू वांट टू चूज कि लाइक क्या होता है ये इन दोनों में से कौन सा बेटर है, व्यू, रिएक्ट, एंगुलर. सो these all three are javascript framework. Okay. These all three are javascript framework. So बेसिकली कौन सा यूज़ करें, कैसा यूज़ करें, कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, इसके ऊपर आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड डेडिकेटेड वीडियो. तो आप आई पुट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो इफ यू वांट. ओके. सो एंगुलर इज वेरी, सो रिएक्ट के साथ एक चीज़ है कि रिएक्ट इज वेरी लाइट वेट, एंड रिएक्ट के साथ कोई रूल्स नहीं है. रूल्स नहीं है इन द केस, इन द सेंस कि आपको एक सर्टन बेसिक HTML लिखना है एक बेसिक DSX या फिर JSX के फाइल में, दैट्स इट. बट एंगुलर का ऐसा नहीं है. एंगुलर हैज अ सेट ऑफ रूल्स कि आपका ये फोल्डर चाहिए, इसमें ये व्यू चाहिए, ये JS चाहिए, ये टाइपस्क्रिप्ट चाहिए, ये चाहिए. सो इट हैज अ सर्टन रूल that you have to build in that way. So वो structured है, वो बहुत structured, because as Google is like वो बहुत structured language है, that is Angular. And Vue is something like थोड़ा सा React, थोड़ा सा Angular, एकदम basic, इतना बड़ा कुछ है नहीं. थोड़ा सा React से आप कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन structured way में लिखना पड़ता है like Angular. तो वहाँ पे भी Angular की तरह middlewares है, मतलब बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं that you can use. Okay. सो वी आर गोइंग ऑफ द टॉपिक. सो आज ये व्यू और एंगुलर नहीं करेंगे, अगली बार कभी करेंगे. सो रिएक्ट, विल कम टू द रिएक्ट. सो रिएक्ट का अभी फिलहाल के लिए वी आर वर्किंग विद 19.2. इसके बहुत वर्जन्स आ चुके हैं. इफ़ यू आस्क मी, सो आई हैव स्टार्टेड आई थिंक रिएक्ट 15, और उससे भी पहले जब ये यूज स्टेट वगैरह हुक्स वगैरह नहीं थे तब से आई हैव स्टार्टेड. सो रिएक्ट 15 से आई थिंक आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द रिएक्ट. सो अभी रिएक्ट वर्जन का 19 आ चुका है. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रिएक्ट ने खुद इम्प्रोवाइज कर दी है, जिसके लिए पहले हुक्स आते थे, हमको खुद करनी थी, लेकिन आपको कंसेप्ट सीखना है. सो वी विल स्टार्ट विद दैट. ओके. ये हो गया वाई रिएक्ट एक्चुअल में बना क्यों, वाई द रिएक्ट एक्चुअली बिल्ड, ये हो गया उसकी स्टोरी. अभी रिएक्ट ही क्यों सीखना चाहिए, उसके लिए कुछ स्टैट्स है जो कि मैं बताऊंगा. पहला तो रिएक्ट रिएक्ट का जो लर्निंग कर्व है, रिएक्ट सीखने में जो टाइम लगता है वो बहुत ही कम है. सो यू कैन लिटरली आई वुड से लाइक आज हम एक वीट पे जाके एक एप्लीकेशन बना देंगे, एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन रिएक्ट फ्रॉम टुमारो. ओके. दैट्स लर्निंग कर्व उसका बहुत ही कम है. दैट्स अ फर्स्ट एडवांटेज. सेकेंड, रिएक्ट का एडवांटेज ये है कि रिएक्ट में आप दोनों भी चीज़ें बना सकते हो. मतलब रिएक्ट में वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, और रिएक्ट में आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हो. उसके कंपोनेंट चेंज हो जाती है, लाइब्रेरी चेंज हो जाती है. दैट इज द सेकेंड एडवांटेज. डिमांड उसका ज़्यादा है बिकॉज उसका लर्निंग कर्व कम है, इसके लिए मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है. और रिएक्ट के लिए अगर आप स्टैटिक एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हो, मतलब सॉरी MVP बनाते हो, MVP नहीं क्या बोलते हैं उसको,
वेब प्रोग्रेसिव वेब, उसको क्या बोलते हैं यार, सॉरी यार मैं भूल गया। रिएक्ट प्रोग्रेसिव ऐप, सॉरी, वेब ऐप, वेब ऐप बोलते हैं उसको। उसका कोई टर्म है, हाँ, SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन। इफ यू आर क्रिएटिंग अ SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन, जहाँ पे एक बेसिकली यू रिमेम्बर राइट, वी हैव क्रिएटेड वन सिंपल जावास्क्रिप्ट वाला एप्लीकेशन, ओके। सो जावास्क्रिप्ट का बेसिक एप्लीकेशन अगर आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हो, सो आप उसको बिल्ड करा सकते हो, और वो बिल्ड शेयर्ड होस्टिंग पे भी होस्ट कर सकते हो, तो होस्टिंग का खर्चा बहुत कम आता है। सो दैट इज वन मेजर एडवांटेज। सो SPA बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सारा आप SPA बना के आप पूरी की पूरी ई कॉमर्स, अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट बोलो ना, तो भी वो SPA में बन सकती है सिंगल पेज एप्लीकेशन में। मतलब नॉट एकदम अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी, उसमें बहुत सारे APIs वगैरह होते हैं, लेकिन अगर कोई बेसिक सी वो होते ना, मतलब बेसिक सी एप्लीकेशन, तो SPA बनती है, और वो दैट कैन बी इजीली एंड कॉस्ट एफिशिएंटली कैन होस्टेड ऑन बेसिक शेयर्ड होस्ट एप्लीकेशन। अभी ये शेयर्ड होस्ट क्या होता है, आई विल कवर इन अपकमिंग लाइव्स और अपकमिंग सेशंस, ओके। सो दैट इज फ्यूअर एडवांटेजेस। और रिएक्ट बहुत ही फास्ट है कंपेयर टू एंगुलर व्यू, फास्ट बिल्ड भी होता है, एंड वो फास्ट एज इन फास्ट परफॉर्म भी करता है। दैट्स व्हाई रिएक्ट इज पॉपुलर, ओके। गाइस, एनी क्वेश्चन प्लीज? एनी क्वेश्चन? ओके, सो आज का सेशन इतना बड़ा होने वाला है नहीं, आज मोस्टली वी विल हैव अ बेसिक setup, okay. So first of all, go to your any folder, just create any folder. How to start with React, now we will be moving towards how to start with React, okay. Just give me one minute. Okay, so आई थिंक मेरे प्रीवियसली यूट्यूब पे भी वी हैव एक्चुअली स्टार्ट रिएक्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो हमने एक एक फोल्डर बना के एक एक पैकेज और जेसन बना के डाला है। बट नाउ डेज वी एक्चुअली नॉट नीड इट, ओके। हमारे पास बहुत सारे प्री बिल्ड, AI का ज़माना है, तो एटलीस्ट इतना तो हमको प्री बिल्ड यूज़ करना चाहिए, विच इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट वीट। सो वीट क्या करता है, इट्स गिव्स यू अ basic boilerplate to one second. Yes, yeah. So वीट, या फिर पहले था रिएक्ट, एक पैकेज था क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये अभी भी है, ओके। क्रिएट, लेकिन इसके साथ थोड़े इश्यूज है, ये जो रिएक्ट का भी, ये रिएक्ट बिल्डर 19 के बाद इज एक्चुअली चेंज्ड। बट ये पहले यूज़ करते थे, लेकिन उसके बाद वीट इज़ वेरी पॉपुलर, एंड वीट ही प्रेफर करते हैं सब लोग। सो बेसिकली ये आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर टू स्टार्ट विद वो आपको दे देगा। वन सेक, आई जस्ट फॉरगॉट दैट मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, एंड आई डोंट नो हाउ दिस, how you are checking, you are actually watching on YouTube my screen, okay, then it's fine, but actually latency होगी वहाँ पे, so let me share screen। YouTube पे थोड़ा लेट आता है, so let me share screen also, so you can now actually watch with my latency। so वो latency match नहीं करेगा,
if I'm saying something here, वहाँ पे वॉइस एक होगा, फिर स्क्रीन दिखेगी, that is not good. So I have shared now. Okay. So now you can see here. So Vit is the website. Okay. So how to start? Basically वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है हमको directly app install करना है. So there are uh, multiple plugins. So Vite is not just for the React. Vite is for Angular or whatever you want to set up. So if you just Google it like Vite React installation, so he will give you a guide. So how you have to start. So it's simple. You have to start with Vite latest. Then it will ask you some questions. Okay. So पहले हमको जाना है. We have to create a folder. Okay, and then you have to just open with VS Code. अगर आपको फोल्डर से नहीं खोलना है इसे तो आप जस्ट VS Code खोलो एंड यहाँ पे जाके ओपन फोल्डर करो एंड जस्ट आपको जो भी आपका फोल्डर है यू हैव टू सिलेक्ट दैट फोल्डर. तो आपका फोल्डर जो है बेसिकली आई यूज दिस एक्सप्लोरर ऑन द राइट साइड. वो जनरली VS Code में लेफ्ट साइड में आता है बट आई हैव दिस प्रैक्टिस. तो गाइज डोंट नॉट गेट कंफ्यूज. ये अपना AI का विंडो है. आई एम क्लोजिंग इट and this is the explorer what we get. Generally ये आपके लेफ्ट साइड में होगा. Okay, do not get confused. And you have to open the terminal. तो टर्मिनल ओपन करने के लिए आपको you have to go to I think terminal and if you do this new terminal ये ओपन हो जाएगा. Definitely नया फोल्डर है. You have to trust it. Okay. सो जनरली ये जो टर्मिनल आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे CMD होता है. सो आई यूज़ गेट बैश. तो मेरा ये ऐसा दिख रहा होगा, आपका जैसा भी दिख रहा होगा चल जाएगा, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके. सो वी हैव टू जस्ट गो टू वीट और मे बी यू हैव टू जस्ट टाइप npm create वीट at latest. Okay, you can copy it from this website and you can just add it over here and you can start. So is it looking okay? I mean ये बहुत छोटा नहीं दिख रहा है. Okay, so if you guys are seeing it well. Okay, so basically we have to do a npm create with at latest. So जैसे ही we do enter, okay, यहाँ पे then it will ask you few questions. So first of all, yes, this will happen at very first time because ये जो पैकेज है वो हमारे सिस्टम में नहीं रहेगा. So I have also don't have this package. It will ask you my first time, so I have to do yes and I have to do yes and it will install. Then it will ask every question here. So what is my project name? So I will start like I want to build a React without, you have to add with dash. Okay, इसमें spaces नहीं चलेगा. Without AI हम build करने वाले हैं कुछ basic. So now it will ask you React, pre-React and all. वही होता है एक्चुअली. जूम में आई कैनॉट सिलेक्ट द थिंग्स. ये जूम में सिर्फ जूम होता है, दैट्स व्हाई. ओके, सो बेसिकली सिलेक्ट, you want to play in vanilla React, you want to React and all. So what you have to do, so basically selection के लिए I have to go back there. So I am currently selecting React. Okay, now React में भी it is having a multiple options. जो मैं बात कर रहा था I was having. So TypeScript with React compiler, TypeScript, React router, TanStack router. So these are different packages जो कि आपको वो बना के देगा, because these are TanStack query, React router v7. These are a different packages जिसमें आपको pre-build सब कुछ आता है. TanStack query API कॉल के लिए यूज़ होता है, React router राउटिंग के लिए यूज़ होता है. So for basic, you can at least start with TypeScript or TypeScript with React compiler, that is okay. And TypeScript you must go because TypeScript ही हम आगे जाके करने वाले. और TypeScript एकदम बेसिक सी चीज़ है. I will share some videos, okay, you can watch it. मतलब उसका सिर्फ you have to define the type of objects and then it will good to go. Okay.
so in here I will choose TypeScript with React. यहाँ पे एक SPA का भी ऑप्शन आता था बट अभी हटा दिया इन लोगों ने. What I'll do is I'll go with TypeScript with React compiler. ESLint वगैरह as of now not needed. आप जो भी लोगे OXLint चल जाएगा. ठीक है. So हमारे लिए basic important क्या है? We need to select React. We need to select React TypeScript compiler, वो वाला चीज़. And next you can do yes npm करना है yarn करना है, that is just do yes. Now it will actually scaffold a basic project for you. अभी ये folder के अंदर folder बन गया है because we have created, that is also fine. So if you see here, if I zoom out here, so ये folder के अंदर एक दूसरा folder इसने बना दिया है. ये software I have to change, इसमें सिर्फ zoom ही हो रहा है, इसमें zoom नहीं होना चाहिए, उसमें add should work also. Okay, so basically ये folder बन चुका है यहाँ पे and उसने installation वगैरह कर दिया है and at least start also. So जो project है वो project भी इसने npm run dev करके start कर दिया. So now if I go on website and if I use that localhost, it is already started. So whatever उसने वो basic boilerplate जो भी था, it has already started and it is running on this local. So you can just open it and this is your project. So already count is so stated, everything it's set up. तो हमको ये बाकी चीज़ें नहीं चाहिए डेफिनेटली. सो वी वांट हमारा हमको खुद सब कुछ बिल्ड करना है, राइट. तो बाकी सब हम डिलीट करेंगे और हमारा अपना अपना करेंगे स्टार्ट. ओके, सो ये एक बेसिक सेटअप है. एनी क्वेश्चन? No, any question? No, zoom it. Any question? नहीं. What are the files? That I'm coming into that point, but how to set up? You don't have any questions, right? Files and folder state, folder states and all. I'm coming on that. So files and folders क्या होता है? That I'll explain now. So React को React इंस्टॉल करते हैं तो you need some packages. Okay, ये इसको मैं ऐसा zoom करता हूँ. एक second. I'll make it big. This is I think okay. All right, so रिएक्ट में सबसे पहले जो पैकेजेस होते हैं डिपेंडेंसी पैकेजेस, दैट्स वो यहाँ पे. सो इम्पोर्टेंट फाइल्स इसमें क्या है? पैकेज डॉट जेसन, जिसमें ऑलरेडी सारे पैकेजेस आते हैं. सो बेसिकली यू कैन यूज द पैकेजेस एंड रन द प्रोजेक्ट्स. ओके, रिएक्ट को लगता क्या है? एक एसआरसी फोल्डर. एसआरसी में इट नीड्स ऑल फाइल्स. जो भी अपने को वट एवर फाइल वी विल क्रिएट, इट शुड बी इनटू द एसआरसी फोल्डर. पब्लिक में बेसिकली हमारे इमेजेस एंड ऑल होते हैं. नोड मॉड्यूल्स इज बेसिकली जब भी हम पैकेज डॉट इंस्टॉल करते हैं तो ये सारे पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं. वैसे ये फोल्डर हमेशा गिट इग्नोर में होता है, इसको कभी हम पुश नहीं करते. सो वी नीड दिस टू, पब्लिक एंड एसआरसी, और यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल. बाकी जो है सब कॉन्फिग के फाइल्स है जो वो ऑटो सेटअप में डालता है. सो टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्फिग and Vite का config. So this all config we need when we deploy our software or web application to server. So यहाँ पे there is a plugin. Okay, यहाँ पे एक option होगा, if I'm plugin से right, इस यहाँ पे एक option होगा, see base, I think base. So base is basically our domain में जहाँ पे भी folder name रखना है. So that's a folder name we generally keep here. ओके, सो ये कब यूज होता है? बेसिकली वेन एवर वी डिप्लॉय समथिंग. सो ऑल जो कॉन्फिग्स है जो भी हम डिप्लॉय करेंगे व्हेन वी डू बिल्ड, तो बिल्ड के टाइम पे वो कॉन्फिग्स यूज होता है. सो राइट नाउ यू शुड इग्नोर देम. ओके, व्हेन वी कम टू द कॉन्फिग लेवल, डिप्लॉयमेंट लेवल, वी विल वर्क ऑन इट. ओके, सो इंपॉर्टेंट फाइल्स कौन से हैं? पैकेज डॉट जेसन, वेयर वी एक्चुअली ऐड ऑल पैकेजेस. और रिएक्ट जब भी हम इंस्टॉल करते हैं, वेन एवर डू npm install, so it will pick a name from this package, it goes to npm module or downloads those package and keep it in your node modules. Okay, whatever needed.
index.html, this is a something file which is required, जहाँ पे ये src में जो एक फाइल होती है, ये src में यहाँ से लिंक्ड होता है। सो ये स्क्रिप्ट यहाँ पे डालता है, ये रूट यहाँ पे है। अभी इसका जो यूज़ है लाइक दिस, कहाँ यूज़ होता है, दिस इज कम टू द मेन tsx। सो मेन में हमने ऐप यूज़ किया है, तो ऐप में वो इम्पोर्ट होगा। सो ऐप में ओके कहाँ है, एक सेकेंड, हाँ। सो यू कैन सी inside a main we have a get element by id root। so वो element by id root index.html फाइल से, वो जो root में हमने देखा था index dot okay let me just index dot open। so ये जो index में हमने ये फाइल देखा, right? so index में this id is root। so basically this file will get that root element and render our whole application। तो उसके लिए जितना भी इस जावास्क्रिप्ट का जो भी चीज़ है वो यहाँ से उठाएगा, एंड ये जो ऐप है वॉट एवर वी आर बिल्डिंग, ये इसके इस ड्यू के अंदर सारा रेंडर होगा। ओके अगर इफ इन केस हम यहाँ जाते हैं, हमारा जो लोकल होस्ट खुला है, अगर इफ यू गो एंड व्यू पेज सोर्स, तो हमको सिर्फ इतना ही मिलेगा, बिकॉज एवरीथिंग गेट्स रेंडर आफ्टर वी बिल्ड। आफ्टर मतलब जो भी होता है ऑन द फ्लाई होता है। जैसे कि बोल रहा था मैं डॉम, सो पहले डॉम में कुछ नहीं है, जो भी है वो उसके बाद रेंडर हुआ है, उसका वर्चुअल डॉम रखते हैं, वर्चुअल डॉम रेंडर होता है। तो जो भी चीज़ें हैं वो इस वाले फाइल में ही सब होगा। ओके नेक्स्ट 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 रखते हैं। सो हाँ, सो index.html देन main.tsx जिसमें एक ऐप है, एंड देन ऐप के अंदर सारी चीज़ें हैं। इफ़ यू आई गो कंट्रोल प्लस कंट्रोल होल्ड करके, होल्डिंग कंट्रोल इन इफ क्लिक ऐप, सो ऐप का कंपोनेंट इट विल गेट ओपन। सो जहाँ पे एवरीथिंग दिस गेट स्टार्टेड, जो भी हमने यहाँ पे देख रहा था गेट स्टार्टेड, सो गेट स्टार्टेड इफ आई चेंज इट टू गेट वेलकम टू Synology fine। if I change this and if I reload this, it will change over here। okay so यही अपना मेन यहाँ पे स्टेट यूज़ किया है, यहाँ पे सब कुछ चीज़ें यूज़ करी हैं। ओके दिस इज वेयर वी हैव टू बिल्ड आवर एप्लीकेशन। सॉरी ओके यहाँ पे और एक कंपोनेंट अलग अलग, तो उसके लिए जो भी सी एस एस चाहिए, इट इज़ एक्चुअली रिटर्न इन टू दिस ऐप डॉट सी एस एस एंड इट इज़ इम्पोर्टेड ओवर हियर ऐप डॉट सी एस एस एंड क्लास इज हियर। ओके सो एक बेसिक चीज़ें हैं, आई विल जस्ट एक्सप्लेन द रूल्स। आई वुड से यहाँ पे क्लास के हिसाब से मेरे को याद आया इसके लिए। सो यू हैव सीन हियर क्लास नेम। ओके क्लास नेम यहाँ पे क्यों लिखा है, टू जनरेट अ क्लास, बिकॉज ये जो रिएक्ट का जितना भी कोड है इट्स नॉट एच टी एम एल, इट्स नॉट अ एच टी एम एल। अगर एच टी एम एल में होता तो आई कुड हैव राइट अ क्लास, और जो भी क्लास है उसका आई कुड हैव राइट द क्लास। बट ये है जावास्क्रिप्ट, दिस इज नॉट अ एच टी एम एल फाइल, इट्स अ टी एस एक्स मीन्स टाइपस्क्रिप्ट XML, that is the extension it is called। it's a TypeScript or JavaScript file। okay so in the JavaScript, class is reserved word। class agar aap if you type it's a class is a reserved word, so that's why it's whenever we have to use a class they use a class name in React। it's a basic rule। ऐसे बहुत सारे अलग अलग rules है जो step by step हम लोग आगे जाएंगे। so I'll explain। the basic rule is class name हम क्यों डालते हैं, because class is reserved word। okay so this is the basic thing you can explore। आप इसको पूरा का पूरा you can delete it out, and हम लोग वैसे ही करने वाले हैं, हम इसको delete करेंगे। okay यहाँ पे we will delete everything and we will create our own component। I think let me delete whole app, सब कुछ जो नहीं चाहिए वो सब हटाएंगे हम लोग यहाँ से। okay and we will return only one h1। I will remove everything and just keep a CSS। and so this is a basic one component we have
Okay, this is a basic one component. Okay, so component and all मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है आज के लिए, but I feel it इतना पे रुकना चाहिए मुझे. What do you think? I generally feel थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है. Instead of React, I will go through with basic मेजर चीज़ें जो हमको जावास्क्रिप्ट से लगने वाली हैं. ठीक है, so you understood right about these files? Great. All right, so now इतना तो this is yes, package log JSON is also it's kind of keeping history. So whatever package he installs, right? So what was the history? What was the package? Okay, and there are few packages which internally use a different packages. So हमें दिखने के लिए तो it is something like यही दिखता है, right? लेकिन Babel core में भी it was using something else. तो Babel core if you start तो Babel का template भी it actually use. Okay, so वो हमने इंस्टॉल कर दिया. ये अंदर इसका पूरा ट्रैक होता है, so इसके बेस पे वो री इंस्टॉल करता है. दैट इज द डिफरेंस इन द पैकेज लॉक एंड पैकेज लॉक. ये हिस्ट्री के लिए होता है. ओके, दैट इज लाइक ट्रैकिंग अ हिस्ट्री ऑफ ऑल पैकेजेस. कभी कभी क्या होता है, देर आर फ्यू पैकेजेस हु गोज आउट ऑफ मतलब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो डेप्रिकेटेड हो जाते हैं. डेप्रिकेटेड मीन्स उसका यूज नहीं रहता. तो वो अगर सपोज it might not using in your package.json, but some of your library might using that package. So we have to go to package log json and update the version, or maybe वहां से निकाल के इसको package.json में डालना पड़ता है. It's like a very big level configurational changes. अभी you should not think about it right now. That right now it's not a time to think about it. Okay, more questions. Let's ask a questions. Yes, I don't think so. I have any question on here. No, I don't have a question on YouTube. I should take the questions from you only. Yes, which files? If you talk about the SRC files, yes, you can update. The basic rule you should not update is index.html. जो है वैसा है. You can update the title and meta, that is fine, but you should not touch these two files. Rest you can update. You can update index, you can update basically app, और हमको वही करना है. That is how we have to proceed for further. धीरे 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 we have to move it. Okay. JavaScript में there are two concepts. Okay, maybe एक दो videos है that I should recommend to watch you from my channel. एक second, it will come to copyright. One sec, I am searching on the another monitor. I'll give you YouTube. ओके, सो मैं बोलना ये चाह रहा था कि जावास्क्रिप्ट रिएक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जावास्क्रिप्ट का इज एरेज एंड ऑब्जेक्ट. ये दो चीज़ें हैं विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, और यू कुड से लाइक यही दो चीज़ से रिएक्ट का पूरा पूरा एप्लीकेशन में इसी दो चीज़ें मतलब फंक्शंस, एरे और एरे के जितने भी मेथड्स हैं, फिल्टर, मैप, रिड्यूस, मेजरली ये तीन एंड ऑब्जेक्ट्स को आपको एकदम कोर में समझना पड़ेगा. दैट इज कोर में मतलब ऑब्जेक्ट्स का जो बिहेवियर है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, एक एग्जांपल आई थिंक मैंने ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस इक्वालिटी के लिए आई हैव वन. हैव यू वॉच दैट?
एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस इक्वालिटी वाला एक वीडियो था, एक सेकेंड ना, yes, this one, let me pull over here, this is my studios. See how objects store in a memory. So this is one basic concept, so I don't want to repeat it. Basically, you can see the thumbnail, right? Yeah. See, basically objects are a reference type, तो वो reference store करते हैं. So वो एक concepts है ना, वो React में बहुत use होता है. So I must recommend you watch this video today, and if you've already watched, then reiterate this concept. This is very much needed to reiterate this. कि how objects stores. So as I would say like React का पूरा जब पूरा application जो है, you should have that visibility or visuality. I mean क्या बोलते हैं, visualization, that आप React का पूरा application you should see in array of object. Now take an example of this YouTube screen. Okay, so now if I want to assume it, I want to just visualize it. Okay, so I should visualize this is an array, because this is a multiple item, multiple same item. So this is an array, and inside that it's an object. Object में एक key होगा, this is the image, which is this image, then title, then how many views is there, how and the date which is launched. So if I want to consider, if I want to build this like array, so I have to like let courses or maybe videos होगा ना, right? Videos, that would be an array, ads would be an object. So this is जो भी मेरे स्टूडियो, ये जो मेरा this दिख रहा है, ये this is something I'm visualizing in a data format. Okay, so there would be a title, then video title, then description, maybe then image होगा उसका, so image का जो भी image होगा वो URL होगा, and this is something the multiple videos would be there. So this is how a object level, and this is we will going to transform whenever we apply वो जो भी डेटा है, डेटा टाइप वी विल अप्लाई टू द रिएक्ट, एंड देन ये जो रिएक्ट वाला चीज़ है वो ये रेंडर होगा. सो वो एक विजुअलाइजेशन आना चाहिए एज अ डेवलपर माइंडसेट, वो विजुअलाइजेशन आना चाहिए. नाउ सपोज इफ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस वन ऑब्जेक्ट, देन क्या होगा, देन वो क्या होगा when I am to delete this from object. Suppose basically I want to delete this video, if I have a click here to delete this or download this or delete this. Okay, तो ये वाले एरे से ये वाला चीज़ निकालना है. सो दैट इज़ अ वेरी बेसिक कंसेप्ट. एरे का जो हम स्प्लाइस मेथड यूज़ करते हैं टू पुल आउट वन आइटम फ्रॉम द एरे. ओके, सो दैट इज समथिंग इज नीडेड, दैट विजुअलाइजेशन वी शुड नीडेड. सो ये दिस इज मच इम्पॉर्टेंट. वी शुड हैव अ एरे. उसके बाद एरे के जितने भी मेथड्स है लाइक मैप, फिल्टर, रिड्यूस, स्प्लाइस, स्प्लिट और वॉट एवर एरे के जितने मेथड. ओके, एंड ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट्स में कीज वगैरह भी है. ऑब्जेक्ट्स में एक्चुअली ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, ये जो मेथड्स है, दिस मेथड्स आर रियली रियली इम्पोर्टेंट और रियली रियली reusable in there are 100 times. So मैं हमेशा I would recommend to use only this, कि इतना पढ़ो, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है. रिएक्ट में डिज़ाइन आना चाहिए, ऑब्जेक्ट और एरे के पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि what exactly this methods are. Okay, so my homework for today is just go through with that video. I will be sharing link right away in the chat. Share, copy link. Okay, I will be sharing this. And these are something we should be, जो you have seen already. You can take a reference from YouTube. I am sending on chat also. All right. Any questions? Anyone joined from your college group? Hello.
Am I audible? No? Okay, no one joined. Okay, I think okay. No worries. I mean, that's it about today's session, and I think we should work on your microphone issue. It's better that if I'm able to hear you here, better होगा वो. That is, we always be good. Okay. All right. That's it. I'll stop sharing. And if you have any more questions throughout the day, don't hesitate to ping me and ask me over here, Teams, over chat, wherever possible. Okay. All right. So that's it, guys. And we will be ending stream if anyone not having any questions. I think it's one view, it's yours only. Ha, ha, ha. So nobody is watching on YouTube. I don't know. You can share later with your college streams. Okay. Bye bye. Have a great day. I can able to you can see me. Bye bye. Thank you. Bye. All right. So हम लोग स्ट्रीम खत्म करेंगे अभी जिसके पहले we'll just bye bye. That's it. So if you like अच्छा लगा सेशन तो लाइक करो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स व्हिच इज स्टार्टिंग जो भी है. अभी मैंने भी आई एक्चुअली डिडंट प्रमोट दिस. मेरा कुछ आइडिया नहीं था. कल अचानक से मुझे लगा कि नहीं मुझे कर लेना चाहिए. सो आई हैव स्टार्टेड एंड मोस्टली हम मंडे टू फ्राइडे करेंगे ये सेम टाइम. कंसेप्ट्स अलग होंगे लेकिन आई थिंक आई विल कीप डूइंग दिस लाइव सेशंस अगेन एंड अगेन. इट्स नॉट रिलेटेड टू द बैच के अलावा भी वी विल डू दिस. ओके. सो इफ यू बैच वांट टू टेक अ ब्रेक दैट इज आल्सो फाइन, बट हम ये करेंगे एंड they can also refer later on. All right, thank you guys for watching. See you tomorrow at the same time. Bye bye.